ऑलराइट, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कैसे है ना ये organ pipe. So in addition to the homework given yesterday, I'll give some more which involve these organ pipe, these pipe based questions. Open and closed end are just like stationary waves on a string. And stationary waves on a string mein, I think we solved some 17-20 questions in the HCD. So if you've got that, this is almost exactly the same. ठीक है, अब इस पे based there is this experiment which we do to measure the velocity of sound. Okay, so there are two experiments which are done to measure the velocity of sound. The first one is called as the resonance tube experiment. So if you guys actually if the lockdown opens and you actually get to go to college and you get to do some of the experiments you are supposed to do in college, you will probably get to do this one. Okay, you'll get to do the resonance tube experiment. So what is this experiment actually about? So in this, we measure the velocity of sound. What we do is we take a tuning fork. Let me just zoom in a little bit first. So we take a tuning fork of some known frequency and we cause that to oscillate. Okay, and we cause that to oscillate over a tube of some diameter d containing water. Okay, so there will be a tube of diameter d containing water. Now ये जो water जो रहेगा वो water का level will be adjustable. So either there can be a pipe connected to some other container which you can move up and down and thereby change the water level, or there may be a tap. There may be a tap at the bottom of this जिससे पानी बाहर निकलेगा. But either way the water level is adjustable. It's not very difficult to find the way to adjust the water level. तो इसमें water level को ऊपर नीचे ले सकते हैं. Now when the length of the air column in the tube permits sound to vibrate in one of its harmonics, a loud sound is heard. So this is the phenomena of resonance. तो क्या है कि ये जो अंदर जो ट्यूब है ना, अंदर जो ट्यूब है उसका एक नेचुरल ये जो एयर कॉलम है over the water surface and inside the tube, that air column has a natural frequency dependent on the length of that column, है ना, fundamental frequency and कुछ overtones possible है. So they have some natural frequency dependent on the length of the column. अब क्या होता है, when the tuning fork that you're holding over this air column, जब उसका frequency अलग है, it can force some oscillations inside the tube, but those oscillations will be very weak. But your oscillations will be strong and well pronounced when the frequency of your tuning fork and the frequency of your air column match. This is a phenomenon called as resonance, which you may have heard of in school as well. When the frequency of the tuning fork you're using is the same as the frequency of this air column, or it's a multiple of the air column, a multiple of the frequency of the air column, it's one of the harmonics, then in that case you will hear a loud sound. Okay, in that case you will hear a loud sound. We are not going to get into the depth of resonance, but this idea was similar to something we had discussed towards the end of SHM. SHM के एकदम ending में, I remember, है ना, ऐसा we saw forced oscillations and this phenomenon of resonance. है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है पर्पल में, when external frequency matches the natural frequency of the SHM, then amplitude is maximum. This condition is called as resonance, है ना, and उसका proof वगैरह was of course not what we got into because it was a very dangerous differential equation, but otherwise that's the idea behind resonance. जब frequency match होता है तब एक loud sound सुनाई देगा, तब amplitude strong होगा. Amplitude strong होगा मतलब intensity ज्यादा होगा. Intensity is amplitude का square की proportional. Intensity ज्यादा है तो loud sound. Okay, so that's when you hear a loud sound. Now coming back to this, ठीक है, थोड़ा when the length of the air column in the tube permits sound to vibrate in one of its harmonics, one of the harmonics of the tuning fork, then a loud sound will be heard.
the water level is then lowered, तो हम फिर पानी का level lower नीचे लेके जाएंगे till again a loud sound is heard, till again a loud sound is heard. Okay, so then that means ये पानी का level lower करके we have reached the next overtone. ठीक है, अगर एक water level मिल गया जिस पे resonance हो रहा है और फिर पानी का level कम करते करते वापस resonance मिल गया, so that's now the next overtone. This was of a matching frequency with the tuning fork, and then at the next overtone you'll again get a multiple of the frequency of the tuning fork, so you'll again get a matching frequency, a multiple of that frequency. So the water level is then lowered till a loud sound is heard again. Okay, so again a harmonic is set up, implying the distance delta L moved by the water surface. Now this implies that the distance moved by the water surface should be 1 loop long या lambda by 2 distance long. So that is something I'm going to prove. ठीक है, तो ये मैंने statement लिखा है for us to read again whenever you want, but एक बार इसको अच्छे से अब समझा देता हूँ. तो देखो क्या है, let's say पहले अपना water level ऐसा था, ठीक है, और इसके ऊपर एक tuning fork था. उस tuning fork के कारण, ठीक है, let's say at a particular level of water you managed to get a resonance. So let's say this was oscillating in the fundamental mode. It was oscillating in the fundamental mode. That means यहाँ पे open area में, open end पे you should get a pressure node. Remember, open end is displacement antinode, hence pressure node. तो open end पे pressure node है and fixed end पे pressure antinode है. ठीक है, and just to tell what graph I'm drawing over here, what is this curve that I'm drawing? That's how your pressure amplitude looks. So that green mein likha, that's the pressure amplitude ka graph in a way, because we know sound is a longitudinal wave. वो ऐसा left right मतलब perpendicular to the direction standing wave in a string की तरह actually oscillate नहीं करता है, आगे पीछे oscillate करता है. Okay, but this representation helps us visualize it nicely. This is यहाँ पे pressure node मतलब यहाँ पे ना ही compression ना rarefaction दिखेगा. यहाँ पे pressure anti node मतलब है ना, बड़ा compression बड़ा rarefaction, बड़ा compression बड़ा rarefaction दिखेगा. तो pressure ऊपर नीचे काफी oscillate हो रहा है at the anti node. Okay, so though this is, let's say, our fundamental mode, we have also assumed कि the actual node lies 0.3 distance above the open end. The actual node is lying 0.3 distance above the open end. Okay? And let's say the length of the water surface from the open end is L1. ठीक है, ये सब मान लो पता है हमें. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पानी का water level कम लेते जा मतलब गिराते जा रहा हूँ till I again hear a loud sound. So that means this time now my tuning fork is oscillating. I mean my air column is oscillating in the next overtone. Okay, so if it's oscillating in the next overtone में क्या दिखेगा, एक ऐसा आधा loop की जगह 1.5 loops दिखेगा, है ना. One overtone higher, you'll see 1.5 loops. You'll see 1.5 loops. Okay, so basically इसमें frequency is still the same, lambda is all still the same. Only thing तुम tube का length, air column का length बढ़ा के तुम more loops fit करते जा रहे हो in that air space. Okay, by lowering the water level you are able to fit in more loops in that air space. तो ऐसा पानी का लेवल गिरते गिरते एक और लाउड साउंड सुनाई दिया, मतलब हमें इमीडिएटली पता चल गया कि ये लाउड साउंड से ये लाउड साउंड वो पानी एक मोड से नेक्स्ट ओवरटोन पे चला गया, एक मोड से अगले मोड पे चला गया, ओवरटोन पे चला गया. तो आई एम कॉलिंग, लेट्स से इसमें वाटर लेवल इज L2 and that node is 0.3 distance above the open end. So total length from node to antinode is L2 plus 0.3 D. Remember 0.3 D was our end correction. Not that it's going to matter in our final formula, okay, but you can note कि उधर है 0.3 D. So as I try to find lambda, okay, this clearly looks like half a loop. So L1 plus 0.3 D is half of a loop. One loop is lambda by 2. So L1 plus 0.3 D is half of lambda by 2.
यानी कि दिस इज लैम्डा बाय 4. तो L1 plus 0.3d is lambda by 4. Similarly, L2 plus 0.3d is clearly 1.5 loops. It's 3 by 2 loops. Each loop is half of lambda. 3 by 2 lambda by 2 यानी कि 3 lambda by 4. ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिखने के बाद I'm going to subtract them. सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस फॉर्म और उस फॉर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा L2 minus L1. देखो एन करेक्शन दोनों के लिए कट जाएगा. एन करेक्शन कट गया. L2 minus L1 लेफ्ट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड 3 lambda by 4 minus lambda by 4. तो राइट हैंड साइड इज जस्ट lambda by 2. यानी कि जितने से हमने पानी का लेवल लोअर किया वही डेल्टा एल था. L2 minus L1 इज डेल्टा एल. जितने से वाटर लेवल लोअर किया वो lambda by 2 है. You're lowering the water level by lambda by 2. In fact, as ये और डायरेक्टली आ सकता है, ऐसा नहीं कि हम सब्ट्रैक्ट करके सरप्राइज हो रहे हैं, ओह अच्छा ऐसा आ गया lambda by 2. और डायरेक्टली भी आ सकता है, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस में क्या बोला, जब तुम पानी का लेवल तुम लोअर करते हो till you hear one more loud sound, that means you're fitting in one more loop. तुम पानी का लेवल लोअर करके तुम एक और लूप फिट इन कर रहे हो. This and this is actually one loop. If you rearrange them, it will look like this. So you're actually fitting in one entire loop, and one entire loop का length होता है lambda by 2. So तुम नीचे कितना जा रहे हो when you lower the water level and hear the next overtone, तुम basically नीचे lambda by 2 distance जा रहे हो. So it was no surprise कि delta L is lambda by 2. If you can see it directly, might as well just do that directly. If you feel you need to subtract, ठीक है, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, एक दो लाइन में आ जाएगा. But I hope you can also see directly. इसको नीचे डेल्टा एल डिस्टेंस लेने में एक एक्स्ट्रा लूप आ गया, नेक्स्ट ओवरटोन में चला गया, एक एक्स्ट्रा लूप आ गया. और मतलब एक लूप लैम्डा बाय 2 होता है, तो लैम्डा बाय 2 इज द डिस्टेंस दैट यू हैव इंक्रीज्ड, by which you have increased the length of the air column. So delta L is lambda by 2. एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. एट द एंड तुम डेल्टा एल जानते हो, ये मेजर कर सकते हो विद द स्केल. तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है, लिखा रहता है ट्यूनिंग फोक पे. डेल्टा एल से लैम्बडा आ जाएगा और लैम्बडा से वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज एफ लैम्बडा. लैम्बडा इज 2 into डेल्टा एल. लैम्बडा इज डबल ऑफ डेल्टा एल. लैम्बडा इज 2 into डेल्टा एल. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज फ्रीक्वेंसी into 2 डेल्टा एल. ओके, सो वेरी वेरी सिंपल. अरे वो प्लस एंड माइनस साइन, अरे यार साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैंने इधर ये सॉल्व, मतलब आई सेड सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म एंड ऐड द सेकंड टर्म. और यहाँ पे मैंने वो एडिशन वगैरह करते वक्त लाइन डालते हैं ना, स्कूल में किया होगा, वो लाइन डाला. तो बेसिकली वी आर सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट किया. तो L2 minus L1 is 3 lambda by 4 minus lambda by 4. तो एक तो वैसा भी आ रहा है डेल्टा एल इज लैम्डा बाय 2, और लॉजिकली भी दिखना चाहिए. तुम डेल्टा एल डिस्टेंस नीचे जाओ, एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट ओवरटोन में चला जाता है. ईच ओवरटोन में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लूप आते रहते हैं. सो वी हैव वन लूप एक्स्ट्रा, एंड वन लूप एक्स्ट्रा मींस lambda by 2 distance. This is half of a wavelength. तो बहुत सिंपल होता है रेजोनेंस ट्यूब के क्वेश्चन. मतलब कुछ है नहीं, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, डेल्टा एल दिया रहेगा, वहां से वेलोसिटी निकालोगे. और अगर अगर ऐसा किया है कि दूसरा लेंथ नहीं दिया, एक ही लेंथ दिया और बताया कि फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू यूज दिस इक्वेशन, which is anyways बेसिक पाइप का फंडा. लेंथ इज लैम्डा बाय 4. उस केस में लेंथ को तुम्हें, उसमें लेंथ में यू विल हैव टू ऐड योर एंड करेक्शन if the diameter is given.
Any doubts in this? Okay, nobody is saying anything. Anyone wants me to wait? Okay, I'll wait. एक second. So Shreyansh, Shubham, what is that? हो गया क्या जिसने भी वेट बोला है? Okay, so this experiment, as you can see, cool. So this experiment, as you can see, is useful to measure the speed of sound in air. Okay, it's an open air experiment. But let's say we want to measure the speed of sound inside a gas. Okay, let's say oxygen के अंदर we want to measure, है ना, वो गामा RT by m, रूट गामा RT by m का फॉर्मूला सही है या नहीं, मान लो क्रॉस चेक करना है किसी को. I don't know why they don't want to do that, but मान लो क्रॉस चेक करना है एक गैस के अंदर, पर्टिकुलर गैस के अंदर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर तुम्हें देखना है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, और यू वांट टू नो हाउ इट वाज ओरिजिनली मेजर्ड. So this is how it was originally measured. This guy named Kund, I hope I pronounce it right. So he came up with this apparatus called as the Kund's tube, and with this he was able to measure the velocity of sound inside a gas. Okay, and the idea is very simple. What he did was, so basically one end of the tube he attached a rod, okay, and the rod was then attached to a disc which is attached to the tube further, and he would cause this rod to vibrate longitudinally. Okay, so he set up longitudinal oscillations in the rod. Okay, तो rod ऐसा आगे पीछे oscillate कर रहा है. ठीक है, rod आगे पीछे oscillate करने के कारण what he's going to try and do, he's going to try and make these air molecules inside the tube also oscillate आगे पीछे. Now let's read that once. A cylindrical vessel of variable length contains a gas and some powder. So why is it variable? Because this end can be moved. ये end को हम आगे पीछे खींच सकते हैं. So that's a movable end. The other end is a movable end. इसके अंदर एक गैस रहेगा जो गैस में तुम्हें साउंड मेजर करना है, साउंड का वेलोसिटी मेजर करना है, एंड पाउडर भी होगा, सादा सा पाउडर भी होगा, लाइट पाउडर होगा. फिर rod attached to a disc at one of its ends is set into longitudinal vibrations of frequency f. So that frequency is known. The length of the tube is adjusted so that the gas resonates with the rod. Okay, तो ये again ये कॉलम के लेंथ के हिसाब से इसका कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, है ना. हम क्या करेंगे, we'll continue to and as long as these frequencies don't match, the oscillations will not be very pronounced. Okay, but there will come a point when you, as you keep moving this length, एक ऐसा point आएगा जब इसका length is such कि इसका natural frequency is exactly in line with
rod ka frequency. And in that case, your oscillations will be most pronounced. So there'll be no chaos inside, but there'll be nice, simple, proper oscillations set up inside the air column. ठीक है? तो sound का standing wave बन जाएगा. Sound का standing wave बन जाएगा. And this experiment is a good reminder कि sound is not a transverse wave. It's actually a longitudinal wave. है ना? तो कुछ कुछ जगह sound का node रहेगा. वहां पे क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट नोड. कुछ कुछ जगह डिस्प्लेसमेंट नोड रहेगा. उस डिस्प्लेसमेंट नोड पे क्या होगा? दोस पार्टिकल्स ऑफ द एयर विल नॉट मूव एट ऑल. और बाकी जगह से हाँ. सो आई एम ओके. डायग्राम, कैन आई एक्सप्लेन द डायग्राम अगेन वंस? कूल. हम ज्यादा बताया ही नहीं है. यहाँ पे एक ट्यूब है. ट्यूब के एक एंड पे एक रॉड है अटैच टू अ डिस्क. रॉड को वाइब्रेट किया जा रहा है विद फ्रीक्वेंसी एफ. और ये जो दूसरा एंड है उसका लेंथ को मूव कर करके एडजस्ट करेंगे सच दैट इस कॉलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है becomes equal to the frequency of the rod. And visually you will see that when there is no chaotic motion inside, but there is a nice kind of oscillation that gets set up inside. So if you get to do this experiment, I don't know if you do it in well standard or I think IIT में तुम करोगे, मतलब कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में करोगे. So when you do that, you'll get to see nice distinct oscillations being set up. ठीक है? Now once that happens, क्या हो रहा है? ये कुछ कुछ जगह साउंड का जब स्टैंडिंग वेव बनेगा, कुछ कुछ जगह साउंड का एंटी नोड बनेगा. वो एंटी नोड ये कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड. मतलब वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे विगरसली वाइब्रेट कर रहे हैं. So the powder particles are swept away from the displacement antinodes. They're like a broom. Those air molecules will be like a broom. Okay, at the antinode. So the powder particles get swept away from that antinode. Where will they settle? अब सिर्फ एंटीनोड भी मूव नहीं कर रहा है, एंटीनोड के बगल वाले पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, मे बी लेस विगरसली, बट दे आर आल्सो मूविंग. देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर प्लेस और वन सेट ऑफ पॉइंट्स जहां पे those air molecules don't move at all, and that is about the displacement node. तो जिधर जिधर डिस्प्लेसमेंट नोड है वो सारे एयर मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं. ये एयर मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे रहेंगे, हिलेंगे नहीं. और उसके बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऑसिलेट करते जाएंगे, एंड दे विल thereby sweep the powder away from the region between these two black lines, and all the powder that was between two nodes will only accumulate at the nodes. So what you ultimately see at the end is, the minute this oscillation gets set up, you get to see nice heaps of powder form like this. Okay. So they form heaps when they settle on the displacement nodes. As they form those heaps, okay, there is normally, I think, a scale. Either the tube itself is marked or somehow there's a way of measuring these distances. So the distance delta L between two heaps is measured. The distance delta L between two consecutive heaps is measured. This is the distance between two consecutive nodes. Or the distance between two nodes is also what we call as one loop. So delta L is one loop, and one loop is lambda by 2. Remember, lambda is double of the distance between two nodes. So lambda will be clearly 2 delta by L. ये lambda नहीं है, ये पूरा चीज एक lambda है. Lambda is twice of delta L, or delta L is lambda by 2. Same formula as in the previous page, coincidentally. So again, you'll be given frequency. Again, you'll be able to measure delta L, and the same logic. एक बार delta L से lambda आ गया, तुम v equal to f lambda से velocity of sound निकाल सकते हो. Lambda is basically 2 delta. So you have the exact same formula. Okay. So that's it. I mean, just remember what these two experiments, just remember the logic behind these two experiments. Just remember what distance between powder heaps is. Remember how the experiment in a way looks. हो क्या रहा है उसमें, वो basic idea समझो. बाकी तो underlying equation तो v is f lambda. If you understand what that experiment does, then you will be able to
I'll explain this once. डेल्टा एल कैसा लैम्डा बाई 2 है. अच्छा, ये मानते हो कि ये नोड है, नोड है, नोड है, वो मानते हो नोड्स, पाउडर नोड्स पे बनेगा, पाउडर का हीप, वो समझ में आ गया. डिस्प्लेसमेंट नोड्स पे पाउडर पे हीप बनेगा, बिल्कुल. अब दो नोड के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एल. जस्ट रिफ्लेक्ट योर स्टैंडिंग वेव ना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन वेवलेंथ? वो कोर कंसेप्ट मत बोलो. देखो, ये नोड है, ये नोड है, ये डेल्टा एल है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इज राइट नाउ डेल्टा एल. ये लैम्डा है या ये लैम्डा है? Try to look at the definition of lambda that I gave for a standing wave. Lambda is the second one. Lambda is twice the distance between two nodes. Lambda is two loops, loop 1, loop 2, infinity symbol. Okay? Lambda is two loops. Okay, so therefore lambda is double of delta L. Delta L is one loop, आधा of lambda. वो एक कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, तब पूरा पाइप्स, स्टैंडिंग वेव्स, ये सब रेजोनेंस ट्यूब, कुंस ट्यूब सब हो जाएगा. That concept should be clear. One loop distance between two nodes is half of lambda. Got it? Okay. इस पे क्वेश्चन भी इजी आता है, मतलब वी एफ और डेल्टा एल तीन में से एक चीज देंगे, एक चीज नहीं देंगे, बाकी दो देंगे, तो सवाल बनेगा. So there are, so these have easy questions only, and there are questions on this in your, I'll give you those questions as homework from your HCV. But that's more or less that more or less concludes what we wanted to see, and we are now ready to see the last topic that is in sounds, called as the Doppler's effect. Okay, अच्छा, हाँ, Doppler's effect बहुत मजेदार है. Doppler's effect, I'm just stalling till you guys finish copying this. When you're done copying, let me know. So, है ना, while you're copying, just talking, Doppler's effect का derivation भी बहुत interesting है, and from an advanced point of view, you should know the derivation as well, because based on the derivation, certain other variations can be created, which is in a way what HCV creates. So that's one of the reasons HCV is so good for sound, because I like some of the questions towards the end of this book. They are tough, no doubt. They are tough if you have no idea how Doppler's is derived. But if you have understood how Doppler's is derived and you try working out the derivation the same way, I mean, you can attempt the variations that the HCV gives. But in general, for the most part, Doppler's effect has a simple formula which you should know how to use. तो ये वो एक कंसेप्ट है जिसका फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड डॉपलर जो सवाल आता है, मेजॉरिटी वैसे ही आता है. You wouldn't have the time to sit and derive that. You have to know how to use the formula. The formula has to be memorized. But then if a variation comes, जो एडवांस के लेवल में expected हो सकता है, for you to answer that variation, an understanding of the derivation would be needed. Okay, so it's a fun concept. We'll have a look at that. ये हो गया यहाँ पे कॉपी करके. By the way, have you ever noticed that when let's say you're standing on a train station and a train is coming towards you. Okay, fortunately you're on the platform. The train is coming towards you. So, and let's say the train sounds its whistle. It blows its whistle. So have you noticed that when the train suddenly crosses you, just before crossing and just after crossing, there is a change in the frequency of the whistle? Just before crossing वो typically एक higher frequency होता है, and just after crossing lower frequency होता है siren. Have you ever noticed that? Even maybe in Formula 1 वगैरह अगर देखते हो तो again, even in that, when a car moving really fast, उसका जो आने का जो
मतलब जो साउंड रहता है when it's approaching the camera, the frequency is high. Okay, right after crossing the camera, the frequency is low. So be it a train, एक example मैंने train बोला, train before reaching you, if it blows its whistle, वो frequency एक particular pitch का होगा, but as soon as it crosses you, तुम यहाँ पे खड़े हो, as soon as it crosses you, उसका frequency suddenly गिरेगा, lower pitch हो जाएगा. Even race cars, before they reach, I mean, if you're watching F1 on TV or something, before the race car reaches the camera, वो camera का mic is picking up the sound. Before it reaches the camera, frequency high रहेगा. Suddenly when it crosses the camera, वो frequency गिर जाता है. Like a release of tension, suddenly गिर जाता है. Ambulance में सुना होगा कभी. Ambulance का जो दो note रहता है ना? Before it crosses you, it's of a higher frequency. Just after crossing, it's of a lower frequency. That is all explained by Dopplers. And lightning, I'm not sure. I mean, lightning से कुछ होता है क्या? Lightning में Dopplers? Not very sure if that comes under the category. Huh? But let's see. So let's see how we can explain why this takes place. Okay, let's see how we can explain why this takes place. So देखो क्या होता है. Imagine now I'm working out the derivation. So let's say I have a source over here. Okay, source is S, and I have an observer over here, which is O. Okay, technically hearer होना चाहिए. He is hearing sound, but we're just calling him the observer. Source and observer. ठीक है, source sound produce कर रहा है, observer सुन रहा है. And इस केस में मतलब मान लो कि दोनों एक दूसरे की तरफ move कर रहे हैं. तो the source is moving towards the observer, and the observer is moving towards the source. Their velocities are Vs and Vo respectively. So Vs is not velocity of sound. Okay? Vs is velocity of the source, and Vo is velocity of the observer. Okay? So let's read. Consider a source and an observer moving towards each other with velocities Vs and Vo. The speed of sound in air is V. Okay? The sound का speed in air को मैंने V रखा है. Sound का speed V. सोर्स का है ना, ट्रेन का स्पीड, सोर्स का स्पीड vs एंड ऑब्जर्वर का स्पीड vo. ठीक है, ऑब्जर्वर का स्पीड vo. एक सेकंड में एक डाउट पढ़ लेता हूँ. इज रिलेटिविस्टिक रेड शिफ्ट रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट? यार ये जो यू मे हियर दीज वर्ड समवेयर, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट वगैरह, these are actually I mean that's Doppler effect for light, and that actually is not really in the JEE syllabus, and for some reason you may find these people on YouTube, they normally say कि ये है syllabus में, but whenever you read the syllabus you'll realize it's not in the syllabus, because that comes from relativity. Okay, that those results come from relativity, and relativity in general, the general theory of relativity is not at all in our 11-12 syllabus, not at all in our JEE syllabus. Okay, that's to be studied once you go to college. So ये जो कभी तुम red shift blue shift सुनोगे, है ना, वो actually तुम्हारे फिलहाल JEE के syllabus में, mains या advanced के syllabus में नहीं है. Okay, that said, when we look at wave optics, I may just mention the formula like FYI. ये तुम्हारा चाहिए तो देख लो formula. But मतलब क्या point है formula का without understanding where it comes from, general theory of relativity? Without understanding that, then there's really no point to that formula. And they also, that it's not even in your syllabus. So I may just mention it. Wave optics में टाइम रहा तो I'll just give you that formula, light का Doppler, but वो है नहीं syllabus में, because वो derive किया भी नहीं जा सकता है without studying relativity. ये किया जा सकता है, ठीक है? This is basic mechanics, basic kinematics in fact. तो इसको अब अच्छे से समझेंगे. अब इसमें
The speed of sound in air is v, that was where I was, and frequency produced by the source is f. ठीक है, frequency produced by the source is f. Actual frequency जो source produce कर रहा है वो f. Alright, इसका मतलब देखो क्या है, source का sound का frequency f है, मतलब the source produces a compression pulse every t equal to 1/f seconds. ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी f है, मतलब उसका टाइम पीरियड 1/f है. तो हर टाइम पीरियड वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है. ऑसिलेशन में क्या करता है वो, कंप्रेशन रेरेफैक्शन. तो हर एक टाइम पीरियड में वो एक नया कंप्रेशन मैक्सिमा या एक कंप्रेशन पल्स, कंप्रेशन पीक, हर एक सेकंड में, हर टाइम पीरियड में वो एक कंप्रेशन पल्स प्रोड्यूस करता है. वो पीक को मैं कंप्रेशन पल्स बोल, ठीक है. तो हर एक टाइम पीरियड में वो एक बार वो प्रोड्यूस करता है. एंड our time period is 1/f seconds. Our time period is 1/f seconds. अब in this duration, the pulse itself is going to start moving away. तो pulse source से दूर move करना start करेगा in all directions. Sound spreads uniformly in all directions, right? It only depends on the temperature of the medium, velocity. तो temperature हर जगह same है, तो sound will spread out uniformly in all directions. So साउंड सोर्स जिधर वो प्रोड्यूस हुआ था वो उससे vt डिस्टेंस दूर मूव करेगा. मैं डायग्राम में सब बताऊंगा. while सोर्स खुद vst डिस्टेंस मूव करता है. ओके, तो लेट्स सी द डायग्राम नाउ. अच्छे से डायग्राम देखते हैं. देखो t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये अपना सोर्स है और मान लो इस टाइम पे द सोर्स हैज जस्ट प्रोड्यूस्ड द पल्स, एंड द पल्स द सोर्स प्रोड्यूस्ड, आई एम गोना गिव इट अ नेम and we're going to track its movement. So I'm calling that pulse as pulse 1. Okay, अब अगले टाइम पीरियड बाद, एक टाइम पीरियड बाद, so one time, capital T is time period, so one time period later is ready to produce the next pulse. हर टाइम पीरियड में वो compression pulse प्रोड्यूस करता है. The next एक टाइम पीरियड later is ready to produce the next pulse. उतने टाइम के दौरान दो चीज हुआ है. पहले तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ था वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में v velocity से दूर मूव करता है. So that small sphere starts to become bigger and bigger. Okay, if I track the wavefront, if I track that compression pulse as it spreads out uniformly in all directions, like a ripple becomes bigger with time, वैसे ही this also becomes bigger in size. So it's basically spreading out in all directions uniformly. So my compression pulse spreads out uniformly in all directions with the velocity of sound, and t time में वो source जिधर था ना उससे vt distance दूर चला जाता है. मतलब उस sphere का radius vt हो जाता है. v is velocity of sound, t is time period. तो in t time वो sphere का radius vt हो जाता है. ठीक है, that's how far away it is moved from the point where it was created. But now वो जहां जिधर भी क्रिएट हुआ था उस पॉइंट से अब सोर्स खुद हट गया है, क्योंकि सोर्स इज मूविंग. उतने टाइम में सोर्स कितना मूव करेगा? So in t time moving with velocity ds, obviously we know कि सोर्स ds into t distance मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ. फिलहाल vs is towards the observer, तो ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स ने इतना डिस्टेंस मूव कर लिया. इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद सोर्स अब इधर है. अब सोर्स इधर है और अब एक टाइम पीरियड खत्म हो गया है, मतलब अब इधर सोर्स नया पल्स प्रोड्यूस करेगा. अब इधर इस जगह पे सोर्स एक नया पल्स प्रोड्यूस करेगा. इधर सोर्स एक नया पल्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन दिस pulse and that pulse is not vt, but the distance between these two pulses is actually vt minus vst. The distance between these two pulses is vt minus vst. Can you see that? The distance between these two pulses is v minus vst. In fact,
This distance is what I'm going to call as lambda dash temporarily. You know, why is this? This is like the effective lambda. What is lambda? Distance between two maximas. You know, distance between two maximas as sound propagates as a wave. You can say one wavelength is the distance between two maximas or two minimas. Okay? So the distance between two maximas is your wavelength. तो ये अब effective wavelength, वैसे तो source को उधर ही चुपचाप बैठना चाहिए था और effective wavelength VT होना चाहिए था, and VT होने के साथ साथ वो है ना, actually क्या होना चाहिए था, VT होना चाहिए था, the source should not have moved. तो वो नया pulse और इस pulse के बीच में distance VT होना चाहिए था, and VT is actually V by F. So your traditional V is F lambda formula. बट यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है और सोर्स के मूव करने के कारण सोर्स के मूव करने के कारण अपना वेवलेंथ चेंज हो रहा है. ठीक है, तो जो सामने से साउंड को देखेगा ना, उसको एक अलग वेवलेंथ सुनाई देगा. इनफैक्ट उसको कम वेवलेंथ दिखेगा, कम वेवलेंथ सुनाई देगा. एंड स्मॉलर वेवलेंथ मींस हायर फ्रीक्वेंसी. दैट्स व्हाई व्हेन सम object producing sound is coming towards you, you hear a higher frequency. On the other hand, if you're standing over here, we'll come to these cases later, but if you're standing over here, then तुम्हारे लिए, as sound reaches your ears, as these waves spread out and reach your ears, तुम्हारे लिए दो पल्स के बीच में डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस बहुत बड़ा है ना. इस बार VT plus VST है, दो पल्स के बीच में डिस्टेंस. So if you're standing behind the source, you're going to observe a large lambda, and large lambda means low frequency. Therefore, इसलिए when we stand in front of the source and the source is coming towards us, frequency बड़ा सुनाई देता है. And if you are standing behind the source, मतलब the source has already crossed and it's going away from us, the frequency कम सुनाई देता है. But this is not yet done with. This is just half of the derivation. यहाँ तक कुछ doubt है? I think I just have one animation on this. Not great, but I think थोड़ा speed कम कर लेता. Can you see how when the source is moving towards the right, sorry, as it's moving towards the left of your, as the source is moving towards the left, कैसा इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, कैसे कम है इन पॉइंट्स के बीच में, लैम्डा कम हो गया. the pulses in front of the source are very close to each other, but pulses behind the source are separated by a larger distance. Make sense? So obviously someone standing in front of the source is going to observe a small wavelength between consecutive maxima. Someone standing behind is going to observe a large wavelength. और ऐसा क्यों हो रहा है, ये asymmetry क्यों आ रहा है? Because source चुपचाप एक जगह पे बैठा नहीं है, वो मूव कर रहा है. मूव करने के कारण है ना, वो नेक्स्ट पल्स पिछले पल्स के सेंटर पे प्रोड्यूस नहीं करता है, बट समवेयर एल्स प्रोड्यूस करता है ना. इट डजंट प्रोड्यूस द नेक्स्ट पल्स एट द सेंटर ऑफ द प्रीवियस पल्स. इट हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस. अब इसमें वाटर वेव्स का इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कनेक्शन होगा, but this kind of effect can be observed in water if you keep if let's say you're, how do you explain this, if you're flying over the surface of water, of a water body, you're flying over the surface of a water body, and let's say you're holding a water bottle and that water bottle is leaking. तो तुम एक यूनिफॉर्म रेट पे उड़ रहे हो लेफ्ट की तरफ और तुम्हारे वाटर बॉटल से पानी गिरते जा रहा है, बस the location of where the drop is falling keeps moving towards the left. So consecutive ripples are not concentric. Okay, consecutive ripples are not concentric.
So this is how your Doppler's effect looks. Okay. They should have been concentric circles. They would have been concentric circles if the source would have not moved. Because the source keeps moving towards the left, the circles are not concentric. Where the circle is getting created, वो left की तरफ जाते जाना है, left की तरफ जाते जाना है. Anyways, बाद में थोड़ा better animation दिखेगा तो I will of course share that. Now, so I hope we're done with this page. ठीक है, ये सोर्स के मूवमेंट के कारण ऐसा आगे और पीछे अलग वेवलेंथ आ रहा है सोर्स के मूवमेंट के कारण. एंड वेरी इजी टू फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पल्सेस बहुत इजी है. ओरिजिनल सोर्स के लोकेशन से पहला पल्स vt डिस्टेंस मूव किया विद द स्पीड ऑफ साउंड, बट सोर्स vst डिस्टेंस मूव किया with the speed of the source, and then it produced the next pulse. So what is the distance between consecutive pulses as is going to reach our observer? The distance between consecutive pulses is vt minus vst. As is reaching our observer, the distance between consecutive pulses is vt minus vst. Okay, I'm really stressing the derivation because you should be able to do this yourself also. Now, अब observer का effect देख लो. Okay, now consider, let me read once. Consider the pulses produced on the previous page reaching the observer. ठीक है, ये अपने pulses है produced on the previous page, ये observer के पास पहुंच रहा है. बोला है कि when pulse 1 reaches O, pulse 2 is still v minus vst distance away, है ना, because उनके बीच में separation था v minus vs into t. तो जब पहला pulse O तक पहुंच गया, दूसरा पल्स अभी भी O से कितना दूर है, v माइनस vst डिस्टेंस दूर है. ठीक है, अब एट दिस इंस्टेंट जो दूसरा पल्स है, पल्स 2, और अपना जो ऑब्जर्वर है, they are moving towards each other with the velocity of v for the pulse, that's the velocity of sound in air, and vo for the observer. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों v माइनस vst डिस्टेंस दूर है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ v और v नॉट वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली. v for the pulse and v naught for the observer. Okay, now the relative velocity of approach would therefore be v plus vo. Relative velocity of approach will obviously be v plus vo, because you know कि when two objects move in opposite directions, एक के frame से दूसरे का velocity observe करोगे तो उसका velocity will be the sum of your speeds, है ना. You are going in a train, another train is moving in the opposite direction. एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो उसका स्पीड तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हारा स्पीड प्लस उसका स्पीड का सम उसका स्पीड दिखेगा. तो सिमिलरली ये ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, अरे थैंक गुडनेस, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि यार पल्स 2 v प्लस vo स्पीड से आ रहा है मेरे तरफ. तो ऑब्जर्वर को दिखने वाला है कि अच्छा मैं अभी अभी पल्स 1 सुना, और अब मुझे दिख रहा है कि पल्स 2 मेरे से v माइनस vst डिस्टेंस दूर है, और पल्स 2 मेरे तरफ v प्लस vo स्पीड से आ रहा है. तो पल्स 2 उसको अब और कितने टाइम में सुनाई देगा. तो let t dash be the time taken for the second pulse to reach the observer after pulse 1. This t dash is therefore the apparent time observed between pulses. This is the rate at which the observer is hearing the pulses. Matlab, this is the time period. This is therefore the apparent time period heard by the observer. Is time period ka reciprocal will give the apparent frequency heard by the observer. Okay. So what is the apparent time period heard by the observer? अभी पल्स 1 सुना, उसको पल्स 2 कितने देर में सुनाई देगा, कितने देर में सुनाई देगा, पल्स 2
कितना डिस्टेंस दूर है अपॉन कितने रिलेटिव वेलोसिटी से ओ की तरफ आ रहा है. Pulse to कितना डिस्टेंस दूर है, v minus vst, derived on the previous page, basic kinematics. Relative velocity is v plus vo, basic kinematics again. तो यहां से this is the time period that the observer is hearing. Notice how this is different from the time period the source was producing. Source was producing at a time period t, but source के movement के कारण और observer के movement के कारण observer is hearing at a time period t dash. इसका रेसिप्रोकल ले लो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. तो t dash का रेसिप्रोकल f dash, this is the apparent frequency the observer is hearing. t का रेसिप्रोकल f, this is the apparent frequency the source, this is the actual frequency the source is producing. Okay, I'll rewrite this formula on the next page and properly write what each symbol means. But on this page, make sure you've understood how we derived this. And then when I cross multiply, I get the result f dash या cross multiply भी नहीं, इसका reciprocal ले रहा हूँ, तो I get the result f dash is v plus vo upon v minus vs into f. Okay, so that's your formula. We'll go over the formula on the next page. Formula भी important है. फॉर्मूला भी डिराइव करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए. ओके, ये याद रहना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, बट डेरिवेशन भी आना चाहिए. बिकॉज यूजिंग द फॉर्मूला इज नहीं, ठीक है, डेरिवेशन भी आना चाहिए. इट्स गुड टू नो इट, एंड इट्स बेसिक काइनेमैटिक्स. And it makes you understand why actually kya, why is the frequency really changing. Okay, any doubt? No doubts? Okay, we'll go over the what if v is greater than v is in general going to be greater than vs. V is velocity of sound and vs is the velocity of the source. So in general velocity of sound source से ज्यादा, the sound का velocity 330 होता है. हाँ, so I think you meant the other way. हाँ, तो actually when v is greater than vs ना, then you get to see an effect. That's what we call as a sonic boom. That's created when like when supersonic jets fly. So that's when your jet ka velocity is greater than the speed of sound. तो supersonic jets में वो दिखता है. And sorry, ये क्या है, ये गलत वाला. ठीक है, जैसे ये जो एग्जांपल है ना, ये सोनिक बूम का एग्जांपल है. इसमें क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, सोर्स बहुत तेजी से जा रहा है. इनफैक्ट द सोर्स इज मूविंग फास्टर देन साउंड, है ना. तो इसमें वी एस टी वी टी से ज्यादा है. That's why the source has moved out of the circle. You see the next point where the pulse is created, it's no longer created inside the circle, it's created outside the circle. तो इस पे ज्यादा डॉपलर का क्वेश्चन नहीं आता है. But again, just for your information, इसमें what will happen is anyone in front of the source will not be able to hear the frequency. In other words, if you're going to stand in front of a supersonic jet for some reason, and the supersonic jet is naturally creating some sound, you will not hear the sound of the jet before the jet reaches you. So only people behind the jet hear the sound. वैसा.
so that sound is more concentrated behind the jet, इसलिए वो behind the jet loud sound आता है in this case. So if a jet passes over your building, after some time, after the jet has crossed, थोड़ा आगे जाने के बाद, है ना, तो थोड़ा आगे जाने के बाद तुम्हारा मान लो बिल्डिंग यहाँ पे है ना, तो जब जेट क्रॉस करे तब ज्यादा कुछ सुनाई देगा नहीं देगा, बट उसके जाने के बाद you hear a loud sound, and that's because all that energy it was creating is more or less localized. That energy it was creating is now localized in this region instead of spreading uniformly in all directions, है ना, it's more or less localized behind the jet, इसलिए एक ऐसा concentrated loud sound सुनाई देता है. Okay, so that's just a little, I mean you will not get questions on that because you can't stand in front of the jet and really your sound. Basically एक बार मैं तुम्हें ये फॉर्मूला का मतलब क्या है ना, what the terms mean, I'll explain that, then accordingly you will understand when this can be used and when it can't be used. So I'll just explain what these terms are. So I don't think anyone wants me to wait here. Okay, so these are what the terms mean. Okay, बहुत important formula है. You have to remember it correctly. You can come up with your own logic, जितना भी खराब हो, come up with your own logic to remember this correctly. बकवास हो सकता है as long as you remember it correctly. Like the logic I make is, the way I remember this is, है ना, alphabetical order में O S के पहले आता है ना, O is alphabetically before S, तो इसलिए O ऊपर होना चाहिए, S नीचे होना चाहिए. And the other thing is, even life में addition पहले सीखते हैं, subtraction बाद में सीखते हैं. You can't learn subtraction before learning addition. तो पहले addition आएगा ऊपर, subtraction नीचे आएगा. गंदा logic है, बकवास logic है, but 10 years I've not forgotten the formula. I don't need to revise it. It's always there in my head. So just come up with anything of your own, but remember the formula. Okay? This is in case you want to use this. Plus addition पहले सीखते हो life में, plus comes before minus, O comes before S. So plus and O lies above in the numerator, minus and S lies below in the denominator. Plus and O in the numerator, minus and S in the denominator. Okay? Remember whichever way you want, but remember it. Now, what do these terms mean? Of course, you should know what the terms mean. So F is the original frequency जो actually source produce कर रहा है. F dash is the apparent frequency जो observer सुन रहा है. ठीक है, F is produced by the source, F dash is heard by the observer. F dash is heard by the observer. V is the velocity of sound in air. वो confused मत हो जाओ, है ना. VS, don't think S stands for sound. S stands for source in this formula at least. So V is the velocity of sound in air. जो ऊपर भी है, नीचे भी है. VS and BO are very important. These two terms are very important. Okay. V, by the way, ये हमेशा positive ही डालना है. Velocity of sound in air, बस positive value ही डालना है. VS and VO are not actually velocities or not actually speeds, but they are the components of velocities. So VS is the component of the velocity of the source taken towards the observer. क्योंकि मैंने जब ये फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव किया, वो डिराइव करते वक्त I ensured कि source and observer are moving towards each other. That does not mean I need to derive again for any other case. But if I want to talk about any other case, like if I want to include a case where the source moves away from the observer, then in that case, only thing I'll have to consider is Vs will be then negative. So Vs will be negative. So accordingly, all cases get covered. When I say source moves towards the observer with the velocity Vs, हर केस कवर हो जाता है. Vs पॉजिटिव है तो सच में मूव कर रहा है, और Vs नेगेटिव है तो ऑब्जर्वर के से दूर जा रहा है, तो हर केस कवर हो जाता है. ठीक है, तो Vs है क्या? कंपोनेंट ऑफ सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, वो याद करो. Vo है क्या? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स, वो याद कर लो. So basically both these terms
are components of velocity of source and velocity of observer towards each other. They are going to be positive if they are actually towards each other, and they will be negative if they are away from each other. They will be positive if they are towards each other. They will be negative if they are away from each other. That's your Doppler's effect formula. Okay, that's the formula. They'll be positive if towards each other, negative if away from each other. Okay, you just copy kar lo. On the next page, I think, let me just see, I have some questions. So we have questions. So you'll get a hang of this formula. Last page. Let me be done with this page. Then I'll show the last page. ये याद करो, कन्वेंशन याद करो, साइन कन्वेंशन. ठीक है, मतलब जैसे अगर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है और सोर्स 3 के स्पीड से उधर जा रहा है. हाँ, मतलब एक एक करके जस्ट डेमो. अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है ना, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो तुम्हें इधर -3 डालना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट द माइनस साइन, दैट्स ऑलरेडी देयर. वो माइनस साइन के अलावा vs के जगह -3 डालना पड़ेगा. तो उस केस में डिनोमिनेटर माइनस ऑफ -3 एक्चुअली +3 हो जाएगा if the source is actually moving away. And on the other hand, if the source is moving towards the observer, then तुम इधर +3 डालोगे, vs के जगह +3. So then it will become v -3. जस्ट vs के जगह क्या डालना है वो बता रहा हूँ. टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो पॉजिटिव, ऑब्जर्वर से दूर है तो नेगेटिव. सिमिलरली फॉर द ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, बाय द वे आई एम स्टॉलिंग गाइस, प्लीज. जो लोग लिख रहे हैं, तुम लोग लिखते लिखते आई एम जस्ट, डोंट सिट एंड स्टेयर. ठीक है, फिनिश राइटिंग. इन द मीनवाइल आई एम जस्ट मेंशनिंग फॉर दोस हु हैव रिटन, डन, फिनिश राइटिंग, है ना. इसमें ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो तुम +2 डालोगे, एंड अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो तुम -2 डालोगे. हो गया, लिखिए. कोई एनीवन स्टिल वेटिंग हियर? मैं प्रीवियस पेज दिखा रहा हूँ. Let me know when you're done. Let's just try a question to see if we got a hang of the formula. This is our question. ठीक है, 4 parts. Find f dash given source का frequency is always 1200, velocity of sound is always 300. Case A, source and observer moving towards each other with velocities of 150. Case B, they're moving away with velocities of 150. Case C, self-explanatory दिख रहा है. Source towards observer with 100. Observers moving further away with a velocity of 50. Case D, उसका उल्टा. Source left की तरफ with 100, observer left की तरफ. In all 4 cases, find the velocity of sound, or find the velocity of the, क्या बोल रहा, find the frequency heard by the observer. Find the apparent frequency heard by the observer. Find f dash.
चारों सॉल्व कर लो। कम ऑन, आ रहा है क्या? अच्छा, let me just check your answers. हाँ, I'll wait. कर लो कर लो। Pratyasha, the first one is right. Okay, let me see. First one is right. The next one is also right. The next one is also right. And the last one no? सही है। Disha and Pratyasha, your answers are right. Good. सही है, good. What about the others? आ रहा है? You want me to discuss? Yash, that's correct. ना simple है तो ये बस ये टेस्ट था है ना, get our minds heads sorted on how to use the formula. Okay, so this is how most of the questions of Dopplers are. Even when you solve from any textbook, most of the questions of Dopplers are just like this formula based. थोड़ा story वगैरह डालेंगे, some boy was driving a cycle and some girl passed by and he whistled and ऐसा ऐसा story वगैरह कहानी बनाएंगे, but formula वही रहेगा. However, the SCV does something a little bit more interesting with the derivation of Dopplers. So we can maybe see that as we discuss the HCV, or maybe we can see that tomorrow. इसमें quickly formula based, the first one
formula is of course f dash is v plus vo upon v minus vs f. Now v is 300. In the first case, the observer was moving towards the source with a velocity of 50. So observer का velocity positive 50 होगा. ठीक है? Source on the other hand was also moving towards the observer and it was moving with a velocity of 100. So source का velocity positive 100 होगा. Okay? Making this entire thing 350 by 200 times 1200. So that becomes 350 into 6. So this becomes 2100 hertz in the first case. Okay, in the second case, same thing. This time f dash is going to be, this time they're all moving away from each other. So 300 plus अब observer का velocity towards the source. Observer तो source से दूर जा रहा था second case में. दूर जा रहा है, hence observer का velocity towards the source is negative. Similarly, ये minus signs वगैरह plus and minus signs अपने जगह पे डाल दो, don't change that. But finally, what you substitute as VO and VS, उसके लिए you'll have to think whether they are towards each other or away from each other. VS भी away from the observer था, इसलिए VS भी negative रहने वाला है. Okay, so this is F dash in the second case. So इसका आंसर नीचे 400 आएगा, ऊपर 250 आएगा. 1200 by 400 is 3, so this is 250 into 3, 750 hertz. Okay. Next one is, let's see the next one. Who's moving towards whom? So in the next one, the observer is moving away, so VO negative, but source is moving close. Okay, it's like, imagine you want two people to work on a relationship, and if they move, who's making the move towards the other person, that person is showing positive signs. You'll give them positive marks. They're making an effort. जो दूर भाग रहा है, you'll give them negative marks. ये दूर भाग रहा है, तो ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, तो ऑब्जर्वर को negative 50. ठीक है, जितने जोर से दूर भागोगे उतना negative marks. ठीक है, and source 100 के रेट से O की तरफ जा रहा है, positive 100 for the source. So put that in. Yeah. तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, ऑब्जर्वर क्या था, कितने से 50 से दूर जा रहा था, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, माइनस पॉइंट्स. ठीक है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, प्लस पॉइंट्स. ये अलग बात है कि उसके सामने माइनस साइन है, बट सोर्स VS ऑन पेपर इज पॉजिटिव. ओके, सो दैट मेक्स दिस रिजल्ट अकॉर्डिंगली. डिनोमिनेटर 200, न्यूमरेटर 250. So that's 6 times 250, 1500 hertz. Okay, and then लास्ट वाले में आई थिंक सोर्स दूर भाग रहा था, सोर्स को -100 देना चाहिए. ऑब्जर्वर अच्छी काम कर रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर इज मेकिंग द एफर्ट, इज ट्राइंग टू go towards the source. तो ऑब्जर्वर को +50 hertz, +50 will be the velocity of the observer, है ना. positive marks, he's trying to move towards the source, है ना. But unfortunately the source is moving away, तो source को -100. okay? with that इसका आंसर आ गया.
तो डिनोमिनेटर अब इस बार एक्चुअली ऐड हो रहा है 300 प्लस 100 400 हो रहा है 1200 by 400 is 3 350 into 3 is 1050 hertz. Okay, hertz, they're moving away from each other so it hurts. Okay, never mind. So that's your basic Doppler's effect. Okay, we are out of time. We are more or less done with the chapter. कल थोड़ा और मैं variation बताऊंगा Doppler का, एक दो page of theory है. Please feel free to now attempt the HCV. Feel free to attempt the HCV, the rest of the HCV as well, and but don't feel the need to finish it before the TWT. Okay, it's your whatever you're doing. Some of the questions in the HCV are of a good level. ये नहीं कि यार TWT बहुत जल्दी है, I can't afford to do tough questions, तो हम करेंगे ही नहीं. Your preparation, what all the effort you're applying for, in when you study from the HCV, when you solve from the HCV, all that effort is for your mains and your advanced exam. That's not just for some random TWT. All right, so don't rush through things just for your TWT. You have, if you paid attention class and you know all your formulas, and you've gone through my notes, you should do well in the TWT. You should at least perform comfortably through it. Post the TWT, at least by next Wednesday, maybe I'll try to keep another doubt session like the one we had this week. By then, do try to finish the chapter. If you can't before the TWT, try to finish at least by Wednesday. Okay. So the rest of the HCV जो अब तक दिया नहीं था, वो बैलेंस जो होमवर्क है, स्पेसिफिकली वो किस सेक्शन में आएगा? आई थिंक 36 onwards, 36 onwards जो बचा हुआ होमवर्क है ना, so a part of that is going to be on organ pipe. At least उतना कर लो. 36 to 55 is on organ pipe. ठीक है, and you'll be surprised to know कि the rest of that is on Dopplers. उसमें भी some are easy basic Dopplers and some are difficult, so maybe I'll just go through them and I'll give you those categories. तो कौन सा organ pipe का तो कर ही सकते हो before the exam, and easy Dopplers भी थोड़ा बहुत कर ही सकते हो. ठीक है, cool. Chalo, then see you. Bye bye. Welcome. Yes. हाँ जा वेरिएशंस तो पूछा ना कैसा है. एक तो कंपोनेंट का पार्ट आएगा ना, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. बट और वेरिएशन ऐसा है कि HCV ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ पे सोर्स वाज एक्सेलरेटिंग, तो दैट देन नोबडी कैन डू विद द फॉर्मूला. वो जब सोर्स एक्सेलरेट कराता है, दैट कम्स डाउन टू दिस डेरिवेशन. ओके, तो सोर्स जब एक्सेलरेट हो रहा है ना, यहाँ पे जब हमने सोर्स का डिस्टेंस bs into t लिखा, उसकी जगह लिखेंगे ut plus half at square. तो फिर थोड़ा काइनेमैटिक्स का खेल हो जाता है. तो सोर्स का डिस्टेंस मूव्ड इन टाइम t ना, तो वैसा वेरिएशन which is actually easy if you have understood the derivation, but it'll still be a little fun to do. तो वो सब है HCV में which we can, if not before the TWT, at least by next week we can finish that. Okay, there are tough questions. I'll not deny that there are good tough questions in the HCV, but since we are preparing for the advanced exam, we have to expose ourselves to what kind of questions are there. ये तुम कर लोगे तो बस, I mean, there's nothing else that could come in the advanced exam that will take you by surprise. If you can solve sound HCV, you remember all the tough questions, exam में you won't be surprised. अरे इसमें क्या करना, सब हो जाएगा. Okay, चलो, bye.